distinguished guests, faculty members, researchers, innovators, startup founders, innovation ambassadors, students, and all the parties joining us for across the country. A very warm welcome to each of one of you. On the behalf of AICT Innovation Center, Ahmedabad, and AICT Innovation Center, Bhopal, Ministry of Education Innovation Cell, Institute Innovation Council, All India Council for Technical Education, and Ministry of Education, Government of India. It gives me an immense pleasure to welcome you all today's awareness session on the patent filing and prosecution. I am Saurabh Nirmale, Regional and in charge AICT Innovation Center Bhopal, and I have the privilege of being your host for today's session. India is rapidly moving towards becoming a global innovation powerhouse under the vision of Viksit Bharat at 2047. Every innovative idea has a potential to solve a real world challenge, but protecting these ideas through intellectual property is equal. ये मेरी तरफ से तुमने Uh, I request all the participants kindly mute yourselves. Uh, every innovative idea has the potential to solve the real world challenge, but protecting these ideas through intellectual property is equally important. A, a patent not only safeguard an innovation, but also creates opportunities for technology commercialization, startups, spin-offs, and growth in the industrial collaboration and societal impact. Keeping this objective in mind, today's awareness session has been organized to provide practical insight into the complete patent journey from understanding patentability to a filing, prosecution, and a grant. Before we proceed, I would like to acknowledge our colleague who have been instrumental in organizing today's session. I warmly welcome Mr. Mitesh Wade, in charge AICT Innovation Center Ahmedabad, whose dedicated efforts continues to strengthen the innovation ecosystem across the Gujarat region. I also extend a warm welcome to Ms. Happy Devna, young professional and IIC zonal in charge for the central region, for her continuous support in coordinating innovation and entrepreneurship initiative across the region. Now it's my privilege to introduce our esteemed speaker for today's session. We are honored to have with us Shri, Parth, Sejpal, an accomplished intellectual property professional and IPR Chair Professor under the SPRIHA IPR Chair at Saurashtra University. Shri Parth has been actively engaged in promoting intellectual property rights, awareness, patent drafting, patent prosecutions, IP strategies, and innovation management. Through his academic and professional contributions, he has guided researchers, startups, innovators, and educational institutes in protecting and commercializing their innovations. His expertise bridges both the legal and practical aspects of the intellectual property, making him a highly respected mentor in the field of patent and technology transfer. We are truly fortunate to have him with us today to share his valuable knowledge and practical experience. Sir, on the behalf of AICT, Minister of Education Innovation Cell, and AICT Innovation Centers, I would I would like to heartfelt welcome to you. Thank you for accepting our invitation and sparing your valuable time to guide us. I am confident that today's session will be highly informative and beneficial for all the participants. Without taking too much time of your valuable time, I now request our esteemed expert, Shri Parth Sejpal sir,
to kindly take over the session and enlighten us on the patent filing and prosecution. Over to you, sir. Thank you very much, sir, for warm welcome and introduction to mine. Uh, Good morning, all of you. Yes, so I am sharing my presentation. Just 1 minute. Share my presentation. Nitish, can you help me out from where to share this? I am not able to see any option. Share my slide or share my screen. Okay. Parth, sir, you can now share the presentation. I am still not able to share as I need to enter host key. Happy, Yes, can the you check that? presenter. Hello. Yes, ma'am. Yes, Happy. Yes, sir. We have given you the presenter access. Just let me check. I'm giving you the co-host. Just share me host key as I am not still able to. Are you see able to my- do it now? Yes. No. I need to enter host key to claim my. Sir, you can click. Is the share option is available on your screen? It's not available. Okay. Let me do one thing. I am rejoining. Let me check. Within 1 minute, Sure. I will be joining. Happy, Parth, sir is there. You can make him a co-host.
Sir, your presentation is visible now. Parth sir, you are on mute. Yes. A very good morning to all of you. Myself, Parth Sejpal, currently acting as IPR Chair Professor at DPIT, IPR Chair Saurashtra University. Today we'll be seeing different patent filing processes and its prosecution in India, right? So we'll be limiting ourselves to all the acts, that is Patent Act limited to India. Means everything that I will be discussing today will be based on the Patent Act 1970. So there is echo invoice. Okay. Just 1 minute. If I am able to remove it. Is it clear now, or still there is one echo? Okay. So I am presuming that you all know the different types of intellectual properties. That is patent, trademark, copyright, design, uh, semiconductor layout, and plant variety. These are the different types of intellectual properties that can be registered. As well, there is a trade secret that does not require any registration. So today we'll be seeing more about the patent, why it matters, what are the different criteria of patentability. We'll be seeing also how the patent application can be filed, drafting patent specifications, the process of filing patent in India, right? So first will be why it is required. So patent basically is the legal document or the legal rights given to the inventor for the technical advancement or something new, something innovative, something new to the society, a different way of doing something already known, right? A new process or a new product that can be patent. Yes. Okay. So it is a patent covers technical advancement. So different types of IPs have different criteria. So basically, patent covers the innovation in it. There should be some technical advancement, right? And once it is protected, once you are getting the rights of the patent, you will be given the rights on that innovation for 20 years from the date of filing. We'll be seeing the timeline of the patent prosecution. So the 20-year rights is given to the inventor or that is the applicant. Those who have applied for the patent is given the right for 20 years on that specific innovation, right? So patent is a tool for technology commercialization. Once you are doing any R&D, if you are having some new technology, if you are putting it directly in the market without protecting it, or if you have already revealed it in the market before filing for the patent, it becomes public knowledge. And then you will not be able to protect your innovation. That's why the patent rule is first to file rule. It means whenever you are starting any innovation or you are thorough with some technical knowledge, you should first file the patent. You are given the timeline of 12 months once you are filing provisional filing, and you can file the complete filing within 12 months. So once you are starting any innovation or you are having one concept, you should first go for filing of the patent, and later on within 12 months you can submit the complete specification. We'll be seeing the different uh, requirement for the patent, right? Link between IP and startup, that is startups are always valued because of their IP. The valuation of the startup is due to its IP. That IP can be trade brand name, IP can be technology, IP can be their designs, right? So all the IPs give valuation to the startup or to the business. So it creates value, and also it creates a linkage to the GDP of our country. The GDP of the country is always determined by the IP that is filing.
that is being filed from that country, right? So we will be not covering the difference between. Okay, we'll be not be covering the difference between patent and trademark design and everything. Just only will be taking patents. So I hope you all know the difference between trademark, design, copyright, and patent. Brief, that is, patent relates to innovation or technology advancement. Trademark relates to the visual logo or the brand name or the identity or the symbol. Design is to the external appearance, look of the product. You can see this product. This is the design. There is no any technical advancement in it. Just this is a different type of bottle, so it can be design registered. A copyright means that is the expression of your idea. It can be in form of literature, it can be in form of video, it can be in form of music notes, it can be in form of sketch, artistic work, it can be in form of musical notes, it can be in form of drama, play, uh, videography, that can be a movie. So all this comes under copyright. So this is the basic difference between different types of IP. And IP can be overlapping also, right? A trademark, a specific design can be a trademark as well as a design. Some of the artistic work can be copyrighted as well as design registered. Either three of them also can be possible. So it is a overlapping things can be done. Whereas patent, it is the technical advancement. So patent and design can also a specific product patent as well as design can also be registered. So it is the important aspect. Patent needs a technical advancement, or it need to have some innovation in it, right? So there are criteria of patentability. For different IPs, there are different criteria. So for a innovation to be patentable, it need to be novel. It means it should not be nowhere known anywhere in the world. Uh, Even though you are getting the rights only in India or only to the country in which you are applying, still it need to be innovative all over the world. So first criteria is novelty. That is, no part of the innovation or the invention should be known anywhere in the world at the time of filing of the patent. That is the novelty criteria. Second is inventive step. Inventive step means it should not be very obvious to the person skilled in that, right? For example, if we are having some IC engine, in it you are saying that we are having one piston. If you add two piston, it will give more power. So we don't see any engine that is having two piston in the same cylinder, but that becomes very obvious thing that adding it will give more power. That is basic knowledge. But if you are finding any hurdle in developing that upgraded version, then that can be patentable. If it is very simply by addition and it is very obvious thing, then that cannot be patented. And it seems that it is very obvious thing. By just adding the number of cylinders, we will be getting more power. That is very obvious thing. So even though we are not having 20 cylinder engine or 50 cylinder engine, but that cannot be patented because it is already obvious thing in the mind of a person skilled in art. So that is the inventive step. And the third criteria is the industrial applicability. So that is, it should be able to made or used in the industry or in the normal condition. Uh, you all will be aware about the perpetual motion machine, that is PMM, or some of the specific ideas that cannot be exactly made, but theoretically we can prove. So theoretical we can prove that it is novel. Theoretically we can prove that it is new, inventive, that cannot be directly come into the mind of people. But still, if you are not able to manufacture it, if you are not able to make it in multiples, हम reproduction नहीं कर सकते multiple, then it is called it does not fulfill the criteria of industrial applicability. So for a patent or for the innovation to get the rights of the patent, it should fulfill all the three criteria. That is novelty, inventive step, and industrial applicability. Right? If all these criteria are clear, then and then only you will be able to get the rights of the patent. Still,
again there are few exclusions, that even though a few of the innovations fulfill all these criteria, there are some exemptions that under which we are not able to get the patent rights. So the criteria are, firstly, it should not be a scientific theory or principle, right? If you are finding out any law or scientific theory or scientific principle like Newton's law or thermodynamics law or any specific gravity law, that is called discovery, and that type of discovery cannot be patented. So first of all, we should also know the difference between discovery and innovation. Discovery means that is already existing in nature and we have just found out. So mere discovery of any laws or any organisms or any plants, any breeds, animal breeds, that cannot be patented. So discovery of any thing cannot be patented. Even if you are finding out any air, sorry, any gases in the air, or if you are finding out any uh, material that is emitting radioactivity things, then that cannot be patented. It comes under discovery. So mere discovery of anything cannot be patented, even though it fulfills the criteria of novelty or industrial applicability, right? Then second thing that cannot be patented is arrangement or rearrangement of the known products. Like we are having many known products in the market, but if you are adding, merging two, or if you are adding two or three products together, and if you are claiming that it is new, for example, if we are coming up with a umbrella with a fan or with solar panel, right? The umbrella that is having solar panel on the roof, and in the below side there is a fan that will give you air. So that type of umbrella is still not in the market, or it is novel. We can say that it is novel, that ऐसा बनाया नहीं है किसी ने, but it lacks the inventive step because it is very obvious thing, and sometimes it is very known thing. ऐसा बनाया नहीं है, लेकिन बन तो सकता है. There is no any hurdle, there is no any obstruction for developing this type of umbrella. So it does not fulfill the criteria of inventive step. तो ऐसा innovation भी patent नहीं हो सकता है, right? Method of doing agriculture or horticulture, right? Agriculture में अगर आप हो, तो you will be seeing that there are various methods. That once you are taking the crop of groundnut, next year you take the crop of pulses or wheat. Again, next year, if you are coming with the crop of groundnut, then you will be getting the best output. But this type of method that is developed by the farmer cannot be patented, as it is for normal use for the everyone. So again, it is, even though it is novel or inventive, it cannot be patented under patent with section 3. Then method of doing operations, right? If a doctor is doing any operation, and if he finds out new technique, that if he is doing a specific angle or specific process, that process cannot be patented. That by under which he can cure specific disease, but that type of process or that type of technique cannot be patented because that is also for normal human use day-to-day life. Because if any process or if any technique is already patented by any doctor, then no other doctor would be able to use that technique during emergencies or during any operation time, right? So that cannot be patented. But regarding agriculture and regarding operations and everything, agriculture machineries can be patented, right? So don't limit yourself that agriculture में patent नहीं हो सकता है. Agriculture का method of doing harvesting is not patentable, but agriculture का जो machineries होता है like seed drill, thresher, harvester, or any different machines, that can be patented, right? That can be patented. And same way for the medicinal use, the instruments or the devices that we are using, that can be patented. So don't restrict that. सर ने बोला है कि ये पेटेंट नहीं हो सकता, नहीं. जो मेथड यूज करते हैं of doing agriculture
or method for curing someone or method for doing the operation, that cannot be patented. The devices or the machineries or the instruments that are used, that can be patented, right? Then few machines, if that is moral to against the morality of human health, right? If you are doing innovation related to atomic energy or specific to hazardous to human health, that cannot be patented, right? Because it comes against the morality of human being. So that type of innovation cannot be patented. Few of the innovations that is against government, something like counterfeiting machine, or if you are developing any ATM card, if you have developed any ATM card that can withdraw money without entering the PIN or without entering account details, and you can that type of device, you can understand, no? That is novelty, that is innovative, that is inventive, that can be useful also, but that type of innovation cannot be patented. Counterfeiting machine, right? If you are able to develop the same currency, and that type of machine also cannot be patented because it is against a government, right? So these are the few exemptions. Even though there is novelty, even though there is inventive step, even though it can be made in mass, this type of innovation cannot be patented. Now, criteria of patentability, I hope you all understand that the innovation should be technical advance, it should be novel, it should be innovative, and it should be manufacturable. That is the criteria. So, if your innovation fulfills this type of criteria, then and then only you need to proceed for the patent. Else you can go with the design, else you can go with trademark. So your idea, you should bifurcate that my idea falls under patent, either my idea falls on patent or my idea falls on just design or just the external appearance, right? So patent needs innovative or in step, right? Now, when you are going to file the patent, the first stage is to prior art search, because whenever the first criteria of the patentability is to novelty. So, to make our innovation novel, or to verify that our innovation is novel, we should go for the searching. So where we can search and why it is required. So we can search our priors in the patents, research papers, public knowledge, traditional knowledge, anything that is available on internet or YouTube or any journal or any research paper anywhere. So if your innovation or if the technique you are claiming is already disclosed anywhere prior to your innovation, prior to the filing of your patent, then it lacks the novelty, right? अगर कहीं पे already मेंशन किया गया है ऐसा इनोवेशन, या किसी ने ऑलरेडी ऐसे स्टेप्स कहीं पे मेंशन कर दिए, या ऐसा प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में कहीं पे मिल गया है, तो आपका पेटेंट में नोवेल्टी लैप्स हो जाएगा, यू विल नॉट बी एबल टू क्लेम द नोवेल्टी, तो पेटेंट आपको मिल नहीं सकता. तो पेटेंट फाइल करने से पहले वी शुड गो फॉर द सर्चिंग कि our innovation is new or not, our innovation is novel or not, right? To check the novelty, we should go for the prior art search. So we and inventive step also, right? Even if your innovation is merging 2 or 3 different patents, if your innovation is can be prepared by merging 2 or 3 or 4 different products or items or processes already known in the market, then it will be lacking the inventive step, right? So to check that our innovation is novel, our innovation is inventive, we should go for the searching of the patent, right? So where you can go for the searching. So there are more than 196 countries are participating for the patent PCT. That is, in all these 196 countries, you can go for the patent. So every country have their own patent office website. IP India is our Indian patent office website, right? So we can go for the patent searching in IP India, that is, where you can get the patent database of our country, India. If you go for the Google patents, you will get the patents of almost all the countries. eSpaceNet, that is also for the that also covers the patent of almost nearly 130 countries. WIPO patent scope, that also covers the worldwide patent, and USPTO. USPTO is for the patent office of US. So EPO, lots
lots of the countries patent office you need to go through before going for filing of our patent. So you can so the worldwide patent is available at WIPO, right, and eSpaceNet. So you can go for searching under this website, so you can get more relevant patents to yours, the novelty, so you could be able to understand your novelty, or you can able to find what is already known in the um, previous patents. Also, you can use the YouTubes, you can use research paper websites, right? This all comes under your prior searching. So it is helpful to know your innovation is novel or not, as well as if you are going to file your patent by yourself, you should be able to know the different parts of the patent. So you can go through the patent document once you are finding these patents, right? After that, how you can search the patent? You need to, yeah, Nikhil Tiwari, you can just unmute yourself. Yeah. So how to go for the search? आप सबने ये गूगल का या जीमेल में जो एडवांस सर्च होता है वो फीचर यूज किया है, राइट? इन दैट यू आर गेटिंग द ऑप्शंस दैट द mail that contains specific word, the mail that has come from this specific person, specific mail ID, the mail that is having some attachment, the mail that is having the specific attachment of word file, the mail that has been uh, received to me between these two dates. So this type of advanced searching options are available in mail, right? Same way, if you are going for patent searching, you can use the keyword and the classifications, right? So how to generate keywords? Keyword means हमारा जो innovation है, you just write it down the innovation in 2 to 3 paragraphs on paper, right? Find out the important words. So once you are finding out the important words, you just list it down that important words in another table, right? Also find the synonyms of that specific word, right? For example, if you are one of the word, we are taking one example that I have developed a device that can trap the mice without using the electricity, right? ऐसा कोई मैंने डिवाइस बनाया जो रेट को पकड़ लेता है विदाउट यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. मैं पूरा इनोवेशन नहीं डिस्क्लोज कर रहा, या आई एम नॉट शेयरिंग इट, बट जस्ट टेक वी आर टेकिंग द एग्जांपल, राइट? तो इसमें हमारा कीवर्ड्स क्या होगा? माइस, ट्रैप, electricity, right? Electricity is also keyword, but we are using it without electricity, right? So we should find out कि कहाँ ऐसी पैटर्न है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज होती है, लेकिन फिर भी वो वर्ड तो मेंशन होगा कहीं पे कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करते, तो वो भी हमारे कीवर्ड की लिस्ट में आ जाएगा, राइट? तो फर्स्ट वी नीड टू लिस्ट डाउन ऑल द कीवर्ड्स: माइस, ट्रैप, इलेक्ट्रिसिटी, डिवाइस, right? Now we need to find out the synonyms of these keywords, right? किसी ने माइस लिखा होगा, किसी ने रेट लिखा होगा, किसी ने रेप्टाइल लिखा होगा, किसी ने कोई और वर्ड लिखा होगा, that could be the synonym of the word mice or red, right? फिर डिवाइस का भी किसी ने इंस्ट्रूमेंट लिखा होगा, किसी ने और कुछ लिखा होगा, right? So you need to list down all the synonyms beside the keywords, right? Then doing the searching, so while searching you can use these keywords in and or format, right? जो भी synonyms होंगे वो और में होंगे, red or mice or reptile, right? And device or equipment or trapper, right? ऐसा और में आएगा. So you should search this type of query in the eSpaceNet or the WIPO, in which you will be able to find out all the relevant patterns that is having the specific word, जहां में ये सब word mention होंगे, like rat या mice या rodent mention होगा, ऐसी pattern. इसके साथ साथ डिवाइस या ट्रैप या इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों वर्ड आते होंगे, वही पेटेंट आपको सर्च रिजल्ट में आएगी, राइट? अगेन इलेक्ट्रिसिटी आप ऐड कर दोगे, तो इलेक्ट्रिसिटी, रेट और माइस, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी, डिवाइस एंड माइस, ऐसा वर्ड जो भी पेटेंट में मेंशन होंगे वो सब पेटेंट आपको लिस्ट नैरो डाउन हो जाएगी, राइट?
तो आफ्टर दैट यू नीड टू गो फॉर रीडिंग द एब्स्ट्रैक्ट। तो जितनी भी पैटर्न्स आपको मिली है उसमें आप एब्स्ट्रैक्ट रीड कर सकते हो कि इसमें क्या मेंशन किया है, एंड इफ यू फील इट रिलेवेंट टू योर्स यू कैन डाउनलोड इट और यू कैन कीप इट एसाइड। ये आईपीसी क्लास होता है, राइट? The patents are classified in 8 different classes, right? So you can also add the class in the search option, right? जैसे कि हम जितने भी मेल सर्च कर रहे हैं जिसमें अटैचमेंट है, तो अटैचमेंट वाले ही मेल हमको चाहिए। जैसे आईपीसी क्लास मतलब स्पेसिफिक क्लास के पैटर्न हो वही हमको चाहिए, राइट? क्योंकि माइस वाली, इलेक्ट्रिसिटी वाली, ट्रेप वाली पैटर्न मैकेनिकल थिंग में भी होगी, या फिर फार्मास्यूटिकल में भी कहीं माइस और ट्रेप और इलेक्ट्रिसिटी डिस्क्लोज होगी, तो फार्मास्यूटिकल वाली पैटर्न हमको नहीं चाहिए। तो जो क्लास आईपीसी क्लास मैकेनिकल सेगमेंट का है वही क्लास की पैटर्न हमको चाहिए, तो यू कैन ऐड दिस आईपीसी क्लास टू इट। सो अगेन नैरो डाउन हो जाएगी पैटर्न। इफ यू आर हैविंग, अगर आपको पता हो तो जो डेंटिस्ट यूज करते हैं फॉर क्लूथ थिनिंग क्लीनिंग, तो उसमें भी वो ग्राइंडर मशीन होता है, और मैकेनिकल में भी आप शॉप फ्लोर पे जाओगे तो वहां पे भी ग्राइंडर मशीन होता है। तो वी नीड टू आइडेंटिफाई कि हमको कौन से ग्राइंडर मशीन की पैटर्न चाहिए, डेंटिस्ट वाले ग्राइंडर मशीन की या फिर शॉप फ्लोर वाले। तो एज पर दैट यू कैन narrow down your search result by adding the IPC classification, right? The IPC classification you can easily get from your relevant patterns. आप 2-3 relevant patterns पढ़ोगे तो उसमें ऊपर IPC class लिखा होगा, तो you can use that IPC class and again narrow down your result, right? उसमें से आपको बेस्ट जो आपके नजदीक की 8, 10, 15, 20, 25 जितनी भी आपके नजदीक की पैटर्न मिले वो आपको डाउनलोड करके या कहीं पे नोट डाउन करके रखनी होगी, एंड यू नीड टू गो थ्रू इट। आपको उनका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना होगा, उसके क्लेम्स पढ़ने होंगे, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना होगा, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा इनोवेशन मतलब आपका जो इनोवेशन है वो जो ऑलरेडी नॉन पेटेंट है उससे अलग है या नहीं है। तो फर्स्ट थिंग इज सर्चिंग, राइट? उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका इनोवेशन नोवेल है या नहीं है, इन्वेंटिव स्टेप में है या नहीं है। नहीं तो क्या होगा कि आप पेटेंट फाइल कर दोगे, ऐसा सेम पेटेंट ऑलरेडी अवेलेबल होगा, तो आपको साइटेशन में आएगा कि ये तो ऑलरेडी नोन है मार्केट में, तो आपको पेटेंट का राइट्स नहीं मिलेगा, राइट? एंड इफ यू आर गोइंग फॉर फाइलिंग बाय योरसेल्फ, अगर आप खुद फाइल करना चाहते हो तो जो ऑलरेडी पेटेंट आपने डाउनलोड किए उसमें आप अलग अलग रिक्वायरमेंट्स देख सकते हो कि क्या क्या पेटेंट में ड्राफ्ट किया है, राइट? तो दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ गोइंग फॉर द पेटेंट फाइलिंग। नाउ ड्राफ्टिंग पेटेंट स्पेसिफिकेशन, वंस यू आर कन्विंस्ड दैट हमारा इनोवेशन जो है दैट इज यूनिक एंड नोवेल, और अगर कहीं पे मिल गया है तो यू नीड टू मेक योर इनोवेशन मोर डिफरेंट फ्रॉम इट, राइट? अगर ऑलरेडी नोन में कहीं ऐसा कुछ है तो यू शुड मेक इट आउट योर इनोवेशन डिफरेंट फ्रॉम इट। उससे आगे का एडवांस स्टेप में आपको ले जाना पड़ेगा कि इससे भी हमारा एडवांस ये है, उससे आपका डिफरेंशिएट आपको पहले से ही बनाना पड़ेगा कि जो ऑलरेडी आपने साइट किया या हमको मिला है पैटर्न उससे हमारा इनोवेशन इतना अलग है। देन एंड देन यू शुड गो फॉर द ड्राफ्टिंग ऑफ द पैटर्न। मतलब जब ड्राफ्ट कर रहे होंगे तो दैट वुड बी द things that once you are filing it you would not be able to amend it, आप उसको change नहीं कर सकते हो, right? According to rule 15 you are not able to change the draft once it is filed। तो don't be in a hurry कि एक ही दिन में पूरा फाइल कर देना है, आज तो कर ही देना है, ऐसा जरूरी नहीं है। टेक योर टाइम, read the prior documents, read the prior patterns, find out what they have mentioned, and 2-3 things first you need to keep in mind before filing the patent। जो पेटेंट का जो राइट्स मिलता है that right is given only for the claims। here you can see the different fields of the patent, right? कोई भी पेटेंट डॉक्यूमेंट में आपको टाइटल मिलेगा, फील्ड ऑफ इन्वेंशन मिलेगा, बैकग्राउंड मिलेगा, मतलब प्रायर में क्या क्या है हो रहा है या ट्रेडिशनल नॉलेज क्या है वो आपको बैकग्राउंड लिखना पड़ेगा, उसकी समरी लिखनी पड़ेगी। उसके बाद डिटेल डिस्क्रिप्शन हमारे इन्वेंशन का लिखना पड़ेगा कि हमने जो बनाया है वो ऐसे ऐसे वर्क करता है एंड इट विल बी लाइक दिस। जो प्रोसेस है या प्रोडक्ट है उसका डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। उसके बाद क्लेम लिखना होता है। तो क्लेम इज द हार्ट ऑफ द पेटेंट।
राइट। जो भी राइट्स मिलता है आपको दैट विल बी ऑन द क्लेम्स। तो अगर आपने पूरी पैटर्न में डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपने पूरा बता दिया कि भाई जो चूहा होता है वो अंदर आएगा, उसमें ये स्प्रिंग होगी और ये होगा, एवरीथिंग आपने मेंशन कर दिया डिस्क्रिप्शन में, लेकिन क्लेम में आपने कुछ लिखा ही नहीं। क्लेम में सिर्फ ऐसा ही लिखा कि सामने आप या मड़ी क्लेम में आपने कुछ लिखा ही नहीं है। क्लेम में सिर्फ ऐसा ही लिखा है कि वी डू क्लेम माय स्ट्रैपिंग डिवाइस दैट डजंट यूज इलेक्ट्रिसिटी एज डिस्क्राइब्ड अबव। तो आपका आपका पेटेंट पूरा फेल हो जाएगा, क्योंकि आपने कुछ क्लेम ही नहीं किया। क्लेम में ही पूरा टेक्निक, क्लेम में ही पूरा मेथड भी डिस्क्राइब होना चाहिए इन स्पेसिफिक लाइंस। मतलब ऊपर पूरा आपने एलोबरेटेड लिखा होगा डिटेल डिस्क्रिप्शन में, लेकिन क्लेम में भी आपको क्लेम करना है कि ये सब मैं क्लेम कर रहा हूँ। वी आर claiming this innovation, how it is working, how it is looking, right? So that will be the claim. Then abstract means it could be the abstract of your innovation. It should be less than 150 words, right? So these things you need to keep in mind while drafting the patent. And the drawings. Drawings may be you need to provide line diagram or the line diagram during the providing the drawing to the patent office. We should not keep the photographs or we should not keep the CAD diagrams, right? जो सॉलिड वर्क या CAD के जो फिगर्स होते हैं या ओरिजिनल फोटोग्राफ्स होते हैं। रिगार्डिंग फार्मास्यूटिकल्स इट इज फाइन दैट माइक्रोस्कोपिक इमेजेस कुड बी kept, but or the but regarding engineering patterns, you should give specific line diagrams, or you can give flow chart, you can give and there should be no any written things in the diagram. You should already numbering it, and that numbering should be described in the detailed description. कि ये नंबर क्या है, वो नंबर क्या है, 5 नंबर क्या है, 7 नंबर क्या है, राइट? So ड्राइंग्स का भी ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वंस यू आर गोइंग थ्रू द पेटेंट डॉक्यूमेंट्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या ध्यान रखना है ड्राइंग्स में। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज द क्लेम। इफ योर क्लेम्स आर वेग, no one will be able to secure your innovation once it is filed, right? कई बार ऐसा होता है कि जल्दी में आपने क्लेम में 2-5 सेंटेंस लिख दिए कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा वर्क कर रहा है, लेकिन आपने एक्चुअल जो इनोवेशन है वो क्लेम में लिखा ही नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लग दिया कि हमने तो ये 15 पेज का डिस्क्रिप्शन लिखा है, उसमें सब कुछ लिख दिया है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, दिस आर द 5 डिफरेंट मेथड्स की ये प्रोडक्ट हम ऐसे बना सकते हैं, लेकिन क्लेम में आपने कुछ लिखा ही नहीं या इतना स्ट्रॉन्ग क्लेम ही नहीं ड्राफ्ट किया, देन आपकी आपको भी जो राइट्स मिलेंगे वो खुद के भी नहीं मिलेंगे या लैप्स हो जाएंगे, और जो डिस्क्रिप्शन में जो लिख दिया वो डिस्क्लोज हो जाएगा मार्केट में, मतलब आपको भी नहीं मिलेगा। और उसके बाद अगर आप नई पेटेंट फाइल करोगे तो वो प्रायर सर्च हो जाएगा कि भाई प्रायरली ये जो पेटेंट आपने फाइल की थी 2020 में, उसमें तो आपने ये सब डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, तो वो पब्लिक नॉलेज हो गया। तो उसके लिए आपको नई पेटेंट में भी वो राइट्स नहीं मिलेंगे, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ड्राफ्ट द क्लेम प्रॉपरली, राइट? Drawings, clarity, numbering, consistency with the claims, right? And enablement and the best mode disclosure requirements, right? Detailed description में आप जब लिखते हो तो it should be the best method or the best way of doing a process. अगर प्रोसेस पैटर्न है तो आपका जो भी प्रोसेस फॉलो हो रहा है वो आपको बेस्ट मेथड लिखना होगा। अगर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हो तो द बेस्ट वे कि अगर कोई भी लेमैन, any person who is reading that pattern should be able to do it by himself without assistance of the applicant। मतलब मैं अगर वो पेटेंट डॉक्यूमेंट पढ़ लूँ तो मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि ये इस पेटेंट में क्या लिखा है, कि मैं कैसे बना लूँ या कैसे बन सकता है। सो आपको ऐसे ड्राफ्ट करना है। व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? बिकॉज पेटेंट आपको मोनोपोली देता है, that is only for the 20 years। 20 years के बाद it is open for all, public डोमेन में आ जाता है। तो 20 साल तक आपको मोनोपोली मिलती है, उसके बाद anyone should be able to make their product without your support or without your interference, right? तो गवर्नमेंट ये आपको मोनोपोली
देती है, लेकिन उसके सामने आपसे पूरा इनोवेशन पब्लिक डोमेन में रख देती है कि 20 साल आप ये मोनोपोली एंजॉय करो, उसके बाद कोई भी पर्सन ये इनोवेशन प्रैक्टिस कर सकता है. तो इनोवेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड properly, right? Now step by step filing journey, right? Have you ever seen IP India office or where you can file the patent, you know? किसी ने देखा है? Or have you ever anyone have filed patent by themselves? Okay, so I will be showing you. Okay, we'll be taking IP India office go through. Once we complete this presentation, I will be showing you in the end that how you can go for the filing by your own. So invention disclosure prior. तो सबसे पहला काम तो हमने देख लिया कि we should go for the prior searching, right? Then second thing is provisional या complete specification draft करना है. अगर आपका इनोवेशन पूरा आपको पता है तो you should go for the complete specification drafting. If your innovation is not complete, you are into iterative stages, then you should file the provisional claims. Sorry, provisional patent. Provisional patent में claims लिखने नहीं होते. You can provide the claims at the end, within 12 months from the date of filing. 12 महीने के अंदर आप अपना पूरा claim submit कर सकते हो. So initially, if you are filing without claims, that is called provisional filing. If you are filing with complete specification, means you are filing with each and every claim mentioned, then that is called complete specification, right? File हो गया है, हमारा draft complete हो गया है, then we should file the patent application with the patent office in India. That is online assistance is available, so you can directly go to IP India website. You should file the form 1, 2, 3, 5, 9 and 18, right? Form 1 is for the inventor declaration. कौन applicant है, कौन inventor है, उसका form है. Form 2 is for detailed description, या पूरा का पूरा patent का जो details है वो सब form 2 में होगा. Form 3 is for foreign application. If you are going with the foreign filing, you should intimate the Indian Patent Office. So that is for Form 3. Form 5 is for Form 3 is for declaration of inventorship, and Form 5 is for foreign filing intimation. Form 9 is for early publication, right? If you are filing the patent, it will be getting published within 18 months, right? 1.5 years. So if you are interested to get your patent published early, then you should go for the early publication, that is Form 9. And Form 18, that is for request for examination, right? So once you are filing the patent, it does not get examined automatically. You need to request the examiner that you please examine my patent. I have filed my patent and give me approval. So once it is published, then within 48 months, they go for the examination, right? But there is no specific timeline or there is no specific limitation that they need to examine within 48 months. They take their own time, right? So once it is published, you will be able to claim your, you will be able to showcase your innovation that you are in the process of filing the patent. And once the request for examination is filed, the examiner will examine the patent application, and based on it, they will provide their judgment, either grant, either examination report. So that stage will be seen in the next slide, the exact timeline and the exact processes, right? So timeline form and the government fees. The basic thing you need to know is the government fees for filing the patent application. Form 1 is 1600 rupees. Form 9 is 2500 rupees, and Form 18 is 4000 rupees for a natural person, or if the applicant is a educational institute, or if the applicant is a MSME having valid Udyam Aadhaar number. So the fees will remain same for natural person or the educational institute or the institute having MSME certificate. For all others, the fees will be 2.5 times, right? The Form 1 fee would be nearly 5000 rupees. Examination fee, early publication fee would be 7500,
and examination fee would be examination fee would be 10,000 rupees, right? So 2.5 times the fees would be multiplied. These are the government fees for filing the patent in India. Few things before going to the next slide is you should be knowing the difference between applicant and the innovator, right? So rights किसको मिलते हैं? Rights are given to the applicant. Even though innovator have invented this innovation or have this idea, but the rights will be given to the applicant. So whenever you are filing the patent, you should be aware that the rights will be given to the applicant. Why these different things are given? इनोवेटर भी हो सकता है, इनोवेटर का भी एक फील्ड है और एप्लीकेंट का भी एक फील्ड है, लेकिन राइट्स आर गिवन टू द एप्लीकेंट, राइट? तो अगर फॉर एग्जांपल इफ यू आर वर्किंग विथ बजाज ऑटोमोबाइल, तो आपने उनके R&D सेंटर में कुछ भी नया टेक्नोलॉजी डेवलप किया होता है, तो आप इन्वेंटर हो गए, लेकिन जो राइट्स चाहिए होते वो बजाज को चाहिए होते. आप अगर अपने नाम पे ले लेंगे राइट्स, तो कल अगर आप टीवीएस में जाओगे या हीरो मोटरकॉप में जाओगे, तो राइट्स आपके साथ वहां पे चले जाएंगे. तो आपके नाम से अगर राइट्स है, देन the company will not enjoy the benefit of the innovation that they have invented in their R&D center, right? So company will file the patent application in name of the Bajaj Automobile, and innovator will be you or your team, right? So even though if you are leaving his company, even though if you are joining Hero or TVS, the rights will remain with the Bajaj. But उसके पेटेंट में इनोवेटर का नाम लिखा होगा कि भाई XYZ person has invented this feature or invented this innovation, right? So that's why two different columns are given, applicant and the innovator, right? In your case also, being an academician or professionals, you should first know, or you should first finalize that who would be the applicant and who would be the innovator. And innovator should always be a natural person. Innovator cannot be a MSME or the educational institute, right? Innovator तो हमेशा person ही होता है. कोई इंस्टीट्यूट तो इन्वेंट नहीं कर सकता कुछ, कोई MSME तो इन्वेंट नहीं कर सकता, उसके अंदर रहा जो पर्सन होता है वही कुछ इन्वेंट कर सकता है, राइट? तो पर्सन का तो नाम इन्वेंटर में कंपलसरी है. एप्लीकेंट में MSME या एजुकेशन इंस्टीट्यूट या इंडिविजुअल हो सकते हैं, राइट? सो दैट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड बिफोर फाइलिंग द पेटेंट, राइट? I hope that makes you clear the difference between innovator and the applicant. And the rights are always given to the applicant. So right from examination, once you have filed the patent and you have requested for the examination, what they will do? They will examine it. They will prepare, give you the examination report, and based on that examination, they will be citing few patents that आपकी जो इनोवेशन है वो ये सब पेटेंट या ये सब रिसर्च पेपर से मिलती जुलती है, आप इनसे डिफरेंशिएट करके दो. तो यू शुड गिव द रिस्पॉन्स टू द एग्जामिनेशन. इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड योर रिप्लाई, तो दे विल गिव यू द हियरिंग. आपको बोलेंगे कि नहीं, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर रिस्पॉन्स, आपका जो रिस्पॉन्स है वो हमको जस्टिफाई नहीं हो सकता है, तो आप अगेन हमको हियरिंग में आंसर दो कि आपका जो नोवेल्टी है वो जो पहले की ये नॉन पेटेंट से अलग कैसे है, दैट यू नीड टू जस्टिफाई. तो पेटेंट एग्जामिनेशन रिपोर्ट में पेटेंट साइट होती है या फिर जर्नल पेपर साइट होते हैं, रिसर्च पेपर साइट होते हैं, या फिर वीडियोस भी साइट होते हैं कि ये जगह पे ये ऑलरेडी नोन था, तो आपका इनोवेशन कैसे हुआ ये आप जस्टिफाई करो. तो आपको रिप्लाई में वो जस्टिफाई करना होता है, आपको रिस्पॉन्स देना होता है कि भाई मेरा इनोवेशन से ये अलग होता है, ये अलग है, या फिर हियरिंग में भी आपको वो जस्टिफाई करना होता है कि साइटेड डॉक्यूमेंट से आपका पेटेंट अलग कैसे है, राइट? एंड व्हाट इफ दे आर सेटिस्फाइड विथ योर रिस्पॉन्स either in written format or either during hearing, they will grant the patent. And once the patent is granted, it will be valid up to 20 years from the date of filing. From the date of filing, not from the date of grant, right? तो पेटेंट का वैलिडिटी द डेट ऑफ फाइलिंग से लेके 20 साल तक होता है. ग्रांट भले ही दो साल बाद, 3 साल बाद
4 साल बाद होता है, लेकिन उसका वैलिडिटी डेट ऑफ फाइलिंग से स्टार्ट हो जाता है, राइट? एंड इफ they are not justified with your answer, they will reject your application. तो लेफ्ट भी होता है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर पेटेंट ग्रांट ही होता है. If your innovation is not that much strong enough, if you are not able to defend your innovation from the cited patents, then it will be left, it will be rejected. And if it is rejected, no fees will be given back to the applicant, right? फीस वापिस गवर्नमेंट में से नहीं आती है, तो आपकी जो भी फीस आपने भरी होती है वो लैप्स हो जाती है. Yes. Now we will be seeing the timeline of the patent application, right? That is, here you can see I have given you the chart. The first thing is establishing the prior date for the patent application. Once you are filing the patent anywhere, either in India or either in any of the country of PCT, that is 196 countries where Patent Act is applicable, your first date will be established. And from that date only your 20 years starts. So once you are establishing your priority date, your 20 years starts, right? So after that you can file, here you can see the blue mark or the tab that is having light blue, that are the applicant task, that is your task, and the white background is, that is the patent office task. So priority date establish karna aapka task hai. You can file patent application in India. Once you file patent application in India, it will be getting published in the journal. तो जर्नल में पब्लिश का टास्क होता है एग्जामिनर का या पेटेंट ऑफिस का. तो if you are filing early publication, then it will be published early within 3 to 4 weeks. If you are not filing early publication, it will be published within 18 months. After that, you need to file request for examination. Within 48 months of request for examination file कर सकते हो, but during filing only you can file the request for examination. So no need to wait 48 months. At the time of application, you should always file request for examination and request for early publication. This is optional. So request for examination is compulsory. If you are not filing request for examination, your patent will not be examined. Even though it is published, पब्लिश हो जाएगी लेकिन एग्जामिन नहीं होगी अगर आपने रिक्वेस्ट नहीं की है तो. Once you request for examination, patent office takes their own time and they will examine the application. Once they are examined, they will see that it is application is in order of grant. If it is in order of grant, it will be granted. If it is not in order of grant, they will issue an examination report. The examination report need to be answered within 6 months. So you can answer it within 15-20 days, 1 month, as early as possible, but maximum you can use the timeline maximum you are having, that is up to 6 months. And again, when you are submitting the examination report, once you are response to examination report, again it will come to this stage, and again they will examine. If it is in order of grant, they will grant the patent. If it is not, they will issue second examination report, or they will give you hearing. And once you are attending the hearing, if they feel it is in order of grant, it will be granted. If it is not, it will be left, right? So this is the direct timeline of patent prosecution in India, right? The step-by-step process of patent prosecution in India. Any doubt in this, you can write it in the chat box. We'll be taking the questions at the end of this sessions, right? So this is the timeline of patent prosecution in India. Just 1 minute.
सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो एग्जामिनेशन स्टेज, तो जब हमने अप्लाई कर दिया है तो पेटेंट ऑफिस का फर्स्ट काम होता है एग्जामिन करना, राइट, प्रोसिक्यूशन। तो रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन हमको फाइल करना होता है एंड एग्जामिनर अलॉटमेंट वो करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि जो हमारा नियर बाय रीजन होता है वहीं पे एग्जामिनर होता है। द एग्जामिनर कैन बी एलोकेटेड टू एनी ऑफ द पेटेंट ऑफिस लोकेटेड एट दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता। कहीं पे भी वो एग्जामिनर होता है। इवन तो इफ यू आर इन मध्य प्रदेश, आपका पेटेंट दिल्ली में भी जा सकता है या चेन्नई में भी जा सकता है। तो देयर इज नो एनी स्पेसिफिक थिंग के यहीं पे आपका पेटेंट होगा। एनी पेटेंट ऑफिस में आपका पेटेंट एग्जामिन हो सकता है, right? So they will be checking the application completeness, novelty, inventive step and patentability search। वो अपने हिसाब से पेटेंट का नोवेल्टी और इन्वेंटिव स्टेप सर्च करते हैं और उसके ऊपर से वो लोग एग्जामिनेशन रिपोर्ट हमको इश्यू करते हैं। एंड टाइमलाइन फॉर सबमिटिंग द फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट का रिस्पॉन्स इज अप टू 6 months। Within 6 months you need to file the response to examination report। तो हम एग्जामिनेशन रिपोर्ट में हमको क्या देखना होता है? आपके कोई भी पेटेंट में आपको एग्जामिनेशन रिपोर्ट आया है या एनीवन इज अवेयर कि ये वाले स्टेज पे पहुंचे हो आप कहीं पे भी, एंड यू शुड गो थ्रू द एग्जामिनेशन रिपोर्ट, राइट? यू शुड बी एड्रेसिंग द नोवेल्टी एंड इन्वेंटिव स्टेप। उसमें एग्जामिनेशन में आपको साइटेशन में डॉक्यूमेंट्स या एग्जिबिट दिए होंगे, दैट विल बी द पेटेंट डॉक्यूमेंट्स और द जर्नल डॉक्यूमेंट्स। तो यू शुड गो थ्रू दैट जर्नल डॉक्यूमेंट्स। और आपको हमारा आपका इन्वेंशन क्या है उससे डिफरेंशिएट आपको उनको देना पड़ेगा। डिफरेंस आपको टेबुलर फॉर्मेट में आप दे सकते हो या डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में आप स्टेप बाय स्टेप दे सकते हो कि अकॉर्डिंग टू दिस लाइन ऑफ द साइटेड डॉक्यूमेंट उन्होंने ये बोला है। हमारा इन्वेंशन हमारे पेटेंट में आपने जो लिखा होता है, आपके क्लेम में आपने जो लिखा होता है, वो साइड करके आपको बोलना होता है कि मेरे क्लेम 2 के हिसाब से मैंने ये क्लेम किया है, उसमें जो लिखा है वो अलग है, राइट? दिस वे यू नीड टू गिव रिस्पॉन्स टू द एग्जामिनेशन point by point to all the citations and to all the points they have raised, right? You can also amend the claims, narrow down the claims, clarifying the claims and restructure it, but you cannot add claims। जब एग्जामिनेशन आता है तो आप अपने क्लेम्स में चेंज में ऐड नहीं कर सकते कि ये भी मुझे क्लेम करना होता है। यू कैन नैरो डाउन द क्लेम्स। तो जब आप ड्राफ्टिंग करते हो पेटेंट, तब आपको एलोबरेटेड क्लेम ही लिखने होते हैं। पहले से नैरो डाउन करके मत लिखना, पहले क्लेम पूरा कर लेना कि भाई जितना भी हो सके आप क्लेम करते हो। अगर एग्जामिनेशन में ऐसा आया कि ये क्लेम तो इन्फ्रिंज होता है, तब नैरो डाउन कर दो कि ये अब ये क्लेम निकाल देते हैं हम कि ये नहीं चाहिए, चलो। लेकिन पहले से आपने नहीं लिखा है क्लेम तो आपको मिलेगा ही नहीं, राइट? तो इनिशियली व्हेन यू आर ड्राफ्टिंग यू शुड कीप इन माइंड कि आपका क्लेम ज्यादा से ज्यादा ब्रॉड होने चाहिए। एंड व्हेनेवर एग्जामिनेशन कम्स, एट दैट टाइम यू कैन नैरो डाउन योर क्लेम्स, यू कैन क्लेरिफाई इट, यू कैन रिस्ट्रक्चर इट, यू कैन रिमूव इट, राइट? तो उसके बाद आप एग्जामिनेशन रिपोर्ट का रिप्लाई फाइल करते हो, उसके साथ आप रिप्लाई एग्जामिनेशन का रिप्लाई फाइल करना होता है, उसके साथ आपका अमेंडेड क्लेम्स फाइल करना होता है एंड अमेंडेड डिस्क्रिप्शन या अमेंडेड एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं साथ में, या अमेंडेड ड्राइंग्स भी हो सकते हैं साथ में, राइट? So these things you can draft while responding to the examination report, right? And you can cite prior art distinctions and supporting evidence, right? You should keep in mind कि आपका uniqueness, आपका novelty क्या है, जो cited patent है उससे आपका अलग क्या है, वो आपको डिस्क्राइब करना होता है पेटेंट के एफआईआर के रिस्पॉन्स में, राइट? अगर उससे वो पेटेंट ऑफिस सेटिस्फाई नहीं होती है, देन यू कैन गो फॉर द हियरिंग, राइट? तो हियरिंग ऑनलाइन वर्चुअली होती है। वर्चुअल हियरिंग में आपको आपका जो सबमिशन होता है उसके ऊपर से ही आपको ओरल आर्गुमेंट करने होते हैं, राइट? अगर आपने उससे उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट साइट किए होते हैं या उसके अलावा आपने कुछ लिखा हुआ होता है, तो यू शुड अगेन सबमिट इट इन सबमिट द पेटेंट ऑफिस बाय सबमिशन ऑफ हियरिंग, राइट? विदिन 15 डेज आपको वो भी सबमिट करना होता है, रिटर्न सबमिशन। वंस यू आर अटेंडिंग द हियरिंग, आपने जो हियरिंग में जो भी कुछ बोला होता है वो आपको रिटर्न सबमिशन भी करना होता है विदिन 15 डेज ऑफ हियरिंग।
फिजिकल तो मोस्टली अब बंद हो गई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हियरिंग होती है। प्रेजेंटिंग क्लेम अमेंडमेंट्स एंड टेक्निकल क्लेरिफिकेशन आप कर सकते हो बाय विजुअलिंग, बाय गिविंग देम द विजुअल इनसाइट्स कि भाई ये चेंज हमने किए होते हैं, राइट। ये सब ध्यान आपको रखना होता है। रिटन सबमिशन, पोस्ट हियरिंग एंड नेक्स्ट स्टेप, राइट। ग्रांट प्रोसेस, कंडीशंस फॉर ग्रांट आफ्टर सेटिस्फैक्टरी रिस्पांस, अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो दे विल ग्रांट द पेटेंट। द पेटेंट सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है once it is granted and it is again published in the patent journal. Patent journal every Friday को रिलीज होती है, so you can get the patent journals from the IP India website. You can see the number of patents that is being filed every day, right? आपको every week में कितनी patents फाइल होती है वो patent journal में आपको मिल जाती है। पोस्ट ग्रांट ऑब्लिगेशंस रहते हैं कि अगर आपने पेटेंट ग्रांट हो गई आपको, then you need to pay the renewal fees every year. हर साल आपको पेटेंट का रिन्यूअल फीस पे करना होता है फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड ईयर से आप पेटेंट का रिन्यूअल फाइल करना होता है एंड दैट रिन्यूअल फीस 800 रुपीज पर ईयर फ्रॉम थर्ड टू सिक्स्थ ईयर। थर्ड से लेके सिक्स्थ ईयर तक एवरी हर साल आपको 800 रुपये भरने होते हैं। 7th से 10th ईयर तक 2400 रुपीज पर ईयर। 11 से 16 तक 4000 रुपीज पर ईयर एंड 15 तक एंड 16 से 20 तक 8000 रुपीज पर ईयर। तो इट सम ऑफ अप टू नियरली 75,000। तो पेटेंट रिन्यूअल की फीस आपको हर साल भरनी होती है। एंड वर्किंग स्टेटमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एवरी ईयर आपको सबमिट करना होता है कि आपने ये पेटेंट का कितना कॉमर्शलाइज किया है, या आपने कितना प्रोडक्शन किया है, कितना सेल किया है, कितने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, एनीथिंग दैट सेज दैट आपका पेटेंट वर्किंग है। तो दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड एवरी ईयर इन टू सबमिट वर्किंग स्टेटमेंट। अगर आपने रिन्यूअल फीस नहीं पे किए होते तो इट विल गेट लेफ्ट। अगर आपकी पेटेंट रिन्यूअल फीस आपने नहीं पे की है तो देन एनीवन कैन यूज योर पेटेंट एंड यू कैन नॉट क्लेम योर राइट्स ऑन दैट पेटेंट। तो आपका राइट्स अगर आपको सिक्योर करना है तो हर साल भी आपको पेटेंट का रिन्यूअल फीस पे करना रहता है। इट इज समथिंग लाइक ओविंग ए हाउस, इट इज समथिंग लाइक ओविंग ए प्रॉपर्टी। अगर आपने कुछ मकान खरीदा है या जमीन खरीदी है तो क्या है कि हर साल भी आपको गवर्नमेंट में उसकी प्रॉपर्टी टैक्स भरनी होती है, राइट। देन ओनली यू विल बी ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, राइट। इसको कॉमर्शियलाइज करने के लिए भी आप उसके साथ कोरिलेट कर सकते हो कि आपने अगर एक घर खरीदा है तो घर को आप बेच सकते हो, घर को आप रेंट पे दे सकते हो, घर को आप ऑफिस के यूज के लिए रख सकते हो, घर को आप खुद यूज कर सकते हो, घर को आप पीजी करके 5-7 लोगों को यूज करने दे सकते हो। सेम वे अगर आप एक पेटेंट ओन करते हो, अगर आपके पास एक पेटेंट है तो आप पेटेंट को खुद कॉमर्शियलाइज कर सकते हो, पेटेंट को बेच सकते हो, पेटेंट को किसी 5-7 लोगों को कॉमर्शियलाइज करने के लिए दे सकते हो, राइट। लॉन्ग लीज पे दे सकते हो 5-7, right? Same way you can correlate the property, physical property with the patent or the IP property, right? बट हमारी जो IP प्रॉपर्टी है उसकी वैलिडिटी 20 साल है स्पेसिफिकली टू द पेटेंट। तो 20 साल के बाद वो प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी, उसके बाद आप उसके ऊपर राइट्स क्लेम नहीं कर सकते हो, राइट। So don't rush for the prior art searches, inadequate prior search से आप इतना जल्दी करके ऐसा नहीं रश करना है कि भाई कुछ नहीं मिला है हम जल्दी जल्दी पेटेंट फाइल करते हैं। गो थ्रू प्रॉपर प्रायर सर्चिंग, गो फॉर प्रॉपर नोवेल्टी सर्च, क्योंकि जितना अच्छा सर्चिंग आप करोगे पहले देन यू विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश योर इनोवेशन टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो पहले की जो नॉलेज है उससे आप अपना इनोवेशन डिस्टिंग्विश कर सकते हो ड्यूरिंग फाइलिंग ऑफ द पेटेंट। तो जितना अच्छा प्रायर सर्च होगा उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, राइट। ओनली ब्रॉड और ओनली नैरो क्लेम्स नहीं लिखने हैं, राइट। पब्लिक डिस्क्लोजर बिफोर फाइलिंग, दिस वी शुड अवॉइड। अगर आप कुछ इनोवेशन पे वर्क करते हो तो फर्स्ट फाइल फॉर द पेटेंट एंड देन गो फॉर पब्लिक डिस्क्लोजर। पब्लिक डिस्क्लोजर मतलब आप कहीं पे भी शोकेस करते हो, आप यूट्यूब पे या कहीं पे भी आप वीडियो अपलोड करते हो, आप न्यूज मीडिया में देते हो, आप रिसर्च पेपर पब्लिश करते हो, तो दिस ऑल थिंग्स कम्स अंडर पब्लिक डिस्क्लोजर, राइट। क्योंकि वो सब साइट हो सकता है। तो अगर साइट हो गया और आपका एप्लीकेशन फाइलिंग डेट से पहले का वो हुआ तो वो नोवेल्टी लैप्स कर देगा कि पहले ये ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में था ही, तो आपका इनोवेशन नोवेल नहीं रहा,
तो पब्लिक डिस्क्लोजर अवॉइड करना है। poorly drafted inconsistent drawings, right? जैसे मैंने बोला कि आपका पेटेंट ऑलवेज शुड बी एबल टू मेक अदर्स अंडरस्टैंड। मतलब अगर आप पेटेंट ड्राफ्ट करते हो तो आस्क अदर टू रिव्यू इट। दूसरे पर्सन को बोलो कि आप पढ़ो, इससे आपको क्या समझ आता है। आप ये पढ़ के समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर इफ इट इज ओके देन एंड देन गो फॉर द फाइलिंग, उसके बाद ही पेटेंट फाइलिंग के लिए जाओ, राइट? दैट विल बी इजी टू गेट द ग्रांट, राइट? तो वो समझ सकेंगे कि क्या बोलना चाहते हो, क्या इनोवेशन किया है आपने, एंड हाउ इट वर्क्स। मिसिंग स्टैट्यूटरी डेडलाइंस, राइट? ये सब डेडलाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एफआईआर का रिस्पॉन्स 6 मंथ में ही देना है। अगर एफआईआर failing to reply within 6 months, your patent will be abandoned, right? उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो। यू शुड इफ एबंडन हो गई उसके बाद आप कोर्ट में हियरिंग करनी पड़ेगी कि मेरा लैप्स हो गया था, मुझे बीमारी हो गई थी या मेरा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन दैट इज वेरी डिफिकल्ट थिंग, राइट? सो टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिन्यूअल्स का भी टाइमलाइन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक साल में हर साल रिन्यूअल फीस नहीं पे किए तो विद इन 6 मंथ आप पेनल्टी पे करके रिन्यू कर सकते हो, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं कर सकते हो, right? And penalties are very huge, right? Penalties are up to 10,000 rupees if you are missing a single day. So these timelines are very important. अगर आप खुद से जा रहे हो तो you should take care all these things, and confidentiality lapse during collaboration, right? अगर आप किसी के साथ कोलोबरेट करके वर्क करते हो, किसी के साथ मिलके इनोवेशन करते हो, तो confidentially should be maintained. NDA should be signed with the person to whom you are disclosing your innovation, right? So these things you should keep in mind before going for the patent drafting or before working more towards the innovation research, right? So patent applications के लिए thorough patent search is very important. Prior art search, draft claim with the layered scope, right? Maintain confidentiality, file provisional application early to secure priority dates, keep clear, consistent and technical drawings should be required, track statutory deadlines. If required, you can hire a patent professional or not IPR chair, but you can hire patent professionals or patent agent for review or the drafting and filing of your patents, right? So this is all about patent prosecution and things you should keep in mind before going for the patent question answer round. I would like you to showcase the IP India website. Are you able to see my screen fully? Yes, sir. So this is the IP India website where you can find filing process, the journals, everything. So I will be showing you. आप में से किसी ने पेटेंट डॉक्यूमेंट देखे? अगर नहीं देखे तो you just go through few patent documents. So this is IP India website. From here, before you file, these are the different guidelines they have given before you file for the patent, right? Filing process भी उन्होंने दिया है. Public search, this I have said you, the public search. So in past, that is the IP India website search where you can go for the patent search. So here, as I said, क्या पेटेंट में टाइटल में सर्च कर सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट में सर्च कर सकते हो, कंप्लीट फाइलिंग में सर्च कर सकते हो. Here you can use रेट एंड और का यहाँ पे रेट एंड पूरे डिस्क्रिप्शन में अगर सर्च करना है तो वी कैन यूज कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ट्रैप एंड, राइट? ऐसा करके इफ यू आर गोइंग फॉर द सर्च यू जस्ट सी नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स यू आर गेटिंग. ये पब्लिश पेटेंट हम सर्च कर रहे हैं, रेट और इतनी पेटेंट्स ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है. And if you are going with the granted patents, then you can go for the complete specification with rate. फिर और भी यूज कर सकते हैं, रेट और माइस विल बी सीइंग द पब्लिश में ही कितनी पेटेंट बढ़ जाती है. एंड ट्रैप, राइट? उसमें 1818 पेटेंट थी, अब देखते हैं कि इसमें कितनी पेटेंट आती है.
बढ़ गई क्योंकि ज्यादा लोगों ने माइस वर्ड यूज किया है रेड के ऊपर से, तो माइस और रेड दोनों वर्ड इंक्लूड हो एंड ट्रैप ऐसे वाले पेटेंट को इसमें सर्च होके आ गए हैं, राइट। सो हियर यू कैन यूज, दिस इज इटरेटिव सर्च, राइट। वन टाइम एक बार सर्च करने से जरूरी नहीं कि पूरा पेटेंट आपको मिल जाए, आपके रिलेवेंट पेटेंट्स मिल जाए। यू शुड डू इटरेटिव सर्चिंग हियर, राइट। दैट इज, एंड दिस इज पेटेंट स्कोप वेबसाइट। पेटेंट स्कोप में भी आप सर्चिंग कर सकते हो वर्ल्ड वाइड पेटेंट के लिए। Here also you can go for the searching. Then second thing is e-services, comprehensive e-filing services. E-filing services मतलब अगर आप इंडिया में फाइल करना चाहते हो, then here you can create your account, right? न्यू यूजर होते हो तो आप न्यू यूजर साइन अप कर सकते हो। इफ यू आर ए पेटेंट एजेंट और अटर्नी, you can have your account as a agent and you can log into it. Here you can see all the forms, all the 31 forms are selected. You can start from your new application. If your innovation is related to some biological information or biological microbial organism, then you should first go with the NBA filing और उसका कोड लेना होता है, और उसके बाद you can go for the e-filing, right? ज्यूरिसडिक्शन हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, ऐसा ऐसे आप कहीं पे भी आपका पेटेंट एप्लीकेशन जाएगा। टाइप ऑफ एप्लीकेशन ऑलवेज इट शुड, मतलब हमारे लिए इट शुड बी ऑर्डिनरी एप्लीकेशन। स्पेसिफिकेशन आइदर कंप्लीट और प्रोविजनल। यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस और वो सब डालना होता है। डिस्क्रिप्शन कितने पेज में है, क्लेम्स कितने हैं, क्लेम्स के पेजेस कितने हैं, नंबर ऑफ क्लेम्स कितने हैं, एब्स्ट्रैक्ट का पेजेस कितना है, ड्राइंग्स के नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं और नंबर ऑफ ड्राइंग्स कितने हैं, और सीक्वेंस लिस्टिंग का रिक्वायर्ड नहीं है। ये सब पेज के टोटल 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 30 से ऊपर हो गया तो पर पेज आपको 300 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने होंगे, राइट। एंड नंबर ऑफ क्लेम्स भी 10 से कम होने चाहिए। इफ 10 से ज्यादा क्लेम है तो पर क्लेम 180 रुपीज आपको एडिशनल पे करने होंगे, राइट। दैट इज जस्ट फीस। आप क्लेम्स ज्यादा से ज्यादा ड्राफ्ट करो, दैट इज नॉट लिमिटेशन, बट दीज आर द क्राइटेरिया। टाइटल ऑफ इन्वेंशन आपको डालना है, एड्रेस फॉर सर्विस आपको यहाँ पे डालना है। कोई भी, अगर आप 5 एप्लीकेंट है तो कोई एक एप्लीकेंट का आप एड्रेस फॉर सर्विस डाल सकते हो, तो वहां पे आपका कम्युनिकेशन आएगा। मोबाइल नंबर, टेलीफोन, फैक्स नंबर नॉट रिक्वायर्ड। मेल आईडी इज कंपलसरी, राइट। अल्टरनेट मेल आईडी आप डाल सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे आप पूरा आपको ड्राफ्ट करके यहाँ पे पेस्ट करना है। आपको अलग से पीडीएफ भी रखनी है और यहाँ पे भी लिखना होता है। डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे पूरा ऐड करना है। क्लेम्स यहाँ पे पूरा ऐड करना है। एड एप्लीकेंट में आप नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स यहाँ पे स्टेट स्टेट सिलेक्ट करना है, आप कौन से स्टेट से हो। फर्स्ट एप्लीकेंट, कोई एक एप्लीकेंट तो होगा ही, राइट। तो यू शुड सिलेक्ट द स्टेट। फिर यहाँ पे एड एप्लीकेंट करके मेल फीमेल अदर्स, नेचुरल पर्सन, स्मॉल एंटिटी, स्टार्टअप और एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये सब हो सकते हैं। एप्लीकेंट नेम, नेशनलिटी, basic requirement of the applicant, right? And you can add as many as applicant as you require, as you want. And the same, if the applicant and inventor are same, you can select here. If applicant and inventor are different, you can add inventor from here. Inventor details you can. So here you don't see any type of applicant, because it should be a natural person, a human being. तो आपको यहाँ पे नेम ही लिखना है। एप्लीकेंट में आपने देखा कि यहाँ पे टाइप है, स्टार्टअप है या स्मॉल एंटिटी है या नेचुरल पर्सन, बट फॉर द इन्वेंटर इट शुड बी a natural person only, right? Once everything is filed, means यहाँ पे आपको फाइल कर दिया, then you can opt for at the time of filing only form 9, 18 and form 18 आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप एट ए टाइम ऑफ फाइलिंग ओनली यू कैन, आपका ये फॉर्म ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट हो जाएगी बेस्ड ऑन द डिटेल्स प्रोवाइडेड हियर, राइट। And you should upload all the documents. सेव करने के बाद अपलोड, okay, for uploading you should write here everything. टाइटल इज मैंडेटरी, तो ये सब फील्ड आप
भरने के बाद ही अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने में आपको फॉर्म 1 अपलोड करना होता है, यही फॉर्म आपको ड्राफ्ट भी करना होता है, फॉर्म 2 अपलोड करना होता है और ड्राइंग्स अपलोड करना होता है। तो दिस आर द बेसिक थिंग्स यू शुड अपलोड। अगर आपने ये सब सिलेक्ट किए होते हैं तो आपको यहाँ पे ड्राफ्टेड में फॉर्म्स ड्राफ्टेड में आपको ड्राफ्टेड फॉर्म्स में आपको वो सब फॉर्म मिल जाएंगे जो भी आपने फॉर्म ड्राफ्ट किए होंगे। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके साइन करना होता है, प्रोसीड टू सिग्नेचर। यहाँ पे आपको ये फॉर्म 24 है, तो अगर आप क्लेम करते हो कि आप स्टार्टअप है या स्मॉल एंटिटी है या ऐसा कुछ है तो यू शुड अपलोड द डॉक्यूमेंट हियर as relevant and proceed to e-sign. Once you go for the e-sign, you should sign. Digital signature से आप आपका फॉर्म साइन कर सकते हो और आपके बाद यू शुड गो फॉर द मेक पेमेंट। यहाँ पे आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, यू शुड पे द फीस। वंस यू पे द फीस, ये रिसिप्ट जनरेट होगी, राइट? और यू कैन बी एबल टू जनरेट योर सीबीआर। सीबीआर से आपका एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। ये आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आपको दिख जाएगा, you will be able to generate the application. So this is the stage of filing of the patent application, right? I hope almost we have covered everything. Still, if you are having any query or if you want me to take any other specific points, you can ask me, else we'll be concluding our session. So either you can write the questions in the chat box or you can unmute yourself if allowed and you can ask the questions if any. So yeah, I am accessing the chat box. I see there is no any questions till now. It's better, so we can participant. You can raise your hand so we can take your question one by one. कंफ्यूज हो गए हो, इतना ज्यादा समझा दिया या फिर कुछ समझ ही नहीं आया? Okay, someone has raised their hand. Yeah, Dr. TV Dixit. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. Yeah. Sir, suppose the previous inventor has claimed 8 claims, and that apart from that 8 claims, we have claimed another 4 claims on that same work. So, can we go Okay. for a patent or it will be rejected? Yeah, you can go for the patent. Basically, आप जो बोल रहे हो, I am understanding something कि कोई एक इन्वेंटर है, उसने मोबाइल पेटेंट कर लिया है, मोबाइल में जो स्पेसिफिकेशन है वो पेटेंट कर लिया है। नाउ आपका जो इन्वेंशन है वो मोबाइल में फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग का है। तो आपका जब भी इन्वेंशन बनाएंगे आप, तो आपको मोबाइल तो चाहिए ही होगा, उसके बाद ही आप उसमें फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग करेंगे। समथिंग लाइक दैट है कि ऑलरेडी जो प्रायर इन्वेंटर है उसने 8 जो क्लेम कर दिए या 8 स्टेप्स उसने जो क्लेम कर दिए वो फुलफिल करने के बाद ही आपका इनोवेशन वर्क कर सकता है। तो आपको भी पेटेंट के राइट्स मिलेंगे आपके 4 पॉइंट्स पे ही जो आपने इन्वेंट किए। लेकिन जब कॉमर्शियलाइज के लिए जाएंगे तो आपका इनोवेशन सेपरेट नहीं रह सकता, क्योंकि आपका इनोवेशन उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो उनको रॉयल्टी देनी पड़ेगी या उनसे परमिशन लेना पड़ेगा? अगर आप अपना इन्वेंशन खुद कॉमर्शियलाइज करते हो तो उनको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। अगर आप आपका इन्वेंशन उसने जिसको दिया है या वो खुद कर रहा है तो आप उसको दे सकते हो कि आप ये भी इन्वेंशन आप उसमें इंक्लूड कर दो एंड यू गिव मी द रॉयल्टी। लेकिन अगर आप खुद कॉमर्शियलाइज करते हो एंड इफ यू आर यूजिंग द टेक्निक दैट इज क्लेम्ड बाय हिम, then you need to give royalty to that applicant. You should get the permission from that
patent holder. Because that claim submitted by that vendor, that Yes, inventor. yes. He is owing that innovation. Yes. Okay, thank you. So you should if you are going for any R&D, you should know that आप किसी और के पेटेंट को यूज करके अपना इनोवेशन नहीं करते हो ना. अगर आप किसी और के पेटेंट को यूज कर रहे हो, तो जब आप मार्केट में जाओगे तो आपको उसका पेटेंट हर बार यूज करना ही पड़ेगा. Then you need to give royalty to them. Okay, Are you getting? आप कोई yeah, भी yeah. मोबाइल डिवाइस यूज करते हो ना, तो एक मोबाइल में ऑन एन एवरेज 400 से 500 का आईपी, अलग अलग आईपी उसमें है. जैसे कि 802.11 टेक्नोलॉजी है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है, वाईफाई टेक्नोलॉजी है, वोल्टी टेक्नोलॉजी है. तो ये सब टेक्नोलॉजी अलग अलग कंपनीज ओन करती है. फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग का टेक्नोलॉजी है. तो जो भी मैन्युफैक्चरर है, जैसे कि सैमसंग, तो सैमसंग का पूरा डिवाइस में कई अलग अलग इनोवेटर के भी पेटेंट उसमें वो यूज करते हैं. फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग का जो टेक्नोलॉजी वो वीवो ओन करता है. 802.11 का जो सिग्नल का टेक्नोलॉजी वो एरिक्सन ओन करता है. तो उनको अगर मोबाइल बनाना है, मोबाइल बेचना है, तो इन लोगों की टेक्नोलॉजी अगर देनी है उसमें, तो इनको उनको रॉयल्टी देनी पड़ेगी. यस, आई थिंक सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग, दीक्षित सर. Yes, sir. Hello. Yeah, sorry, your voice was breaking due to network issue from my end. So, okay, Dixit sir, it is Yes, clear. sir. Yes, sir. So we'll be I taking- got it. Okay, thank you. Thank you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you. If the patent design is under amended case of controller, how much time it takes, or how can applicant get information about the amendments? Basically, amendment case under a controller, it means once you have submitted your response, or once you have submitted your written statement to the examination, it doesn't means that it is in amendment. Amendment word se mat jao. Amendment means it is under consideration. It means they will be looking to your response once they are getting the time, right? And there is no specific timeline for the any of the task assigned to patent office, right? So you cannot एज्यूम कि इतने दिनों में ही या इतने महीने में ही ये रिस्पॉन्स आपका वेरीफाई हो जाएगा. बट जनरल टाइमलाइन इज, अगर एफईआर आया है और एफईआर का रिस्पॉन्स आपने सबमिट किया है, तो दे विल बी टेकिंग नियरली 4 to 5 months. बट दिस इज based on the assumptions. There is no restriction to them, so they can take their own time, and you cannot get any information about the amendments, right? No, there is no. Don't go with the word amendments. Amendment means just under consideration. Amendment under case under control, it means आपने जो भी changes suggest किए हैं वो under consideration है controller के पास. Nothing else. You cannot get any exact details कि कब examine होगा. Sir, after 20 years, can I reclaim my patent monopoly with the technological advancement? Yes, technological advancement अगर आपने किया है, तो न्यू जो आपने किया है वो आप क्लेम कर सकते हो. That is always a technical advancement. लेकिन ऑलरेडी जो पहले आपने क्लेम कर दिया, उसका राइट्स आपका खत्म हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 3D प्रिंटिंग मशीन है, तो 3D प्रिंटिंग मशीन का तो अब पेटेंट एक्सपायर हो गया, तो एनीवन कैन मेक इट. बट अगर उसकी टेक्नोलॉजी में अगर आप कुछ एडवांसमेंट करते हो, उसके मटेरियल में कुछ एडवांसमेंट करते हो, उसकी जो स्पेसिफिक टूल गाइड है उसमें कुछ एडवांसमेंट करते हो, तो ऐसे पेटेंट मतलब ऐसे इनोवेशन का आप क्लेम कर सकते हो. लेकिन 3D प्रिंटर तो कोई भी बना सकता है, राइट? तो जो पहले जो था उससे कुछ नया होना चाहिए, तो यू कैन गो फॉर द patent. How to conduct patent search? Sir, I have showed you few steps, but thoroughly you need to go iterative searches, right? आपको वो पेटेंट डेटाबेसेस में ही आपके कीवर्ड से इटरेटिवली सर्च करना पड़ेगा कि कौन कौन से पेटेंट्स आपके इनोवेशन से नियर बाय है, रिलेवेंट है. यू कैन यूज द आईपी इंडिया वेबसाइट. मोर रिलेवेंटली यू कैन यूज पेटेंट स्टॉप एंड ई स्पेस नेट. उसमें आपको वर्ल्ड वाइड पेटेंट मिलेंगे, तो
you can go for the eSpaceNet or the patent scope. तो उसमें आपको वर्ल्ड वाइड पेटेंट के रिलेवेंट पेटेंट्स आपको मिलेंगे, बट दैट इज इटरेटिव प्रोसेस. इट इज नॉट अ सिंगल टाइम रन प्रोसेस कि एक बार आपने रन कर दिया और जितनी भी पेटेंट आई वो आपके रिलेवेंट आ गई. नो, you should reiterate your keywords, you should reiterate your IPC classifications, you should narrow down your search results, and then only you will be getting the nearby patterns, right? It can take nearly 2-3 days, 5 days, 7 days is the amount of time you give for the searching. And you should read the abstract first or the title. First, you should read the title. If seems relevant to you, you should read the abstract. And if it seems more relevant to you, you should keep it aside as your search result. Right? So that is the method of doing patent search. I hope it is clear to you, sir. Saurabh, sir. Am I audible? My network is down. Hello. Happy, ma'am? Yes, sir, you are audible. Okay, ma'am. Yeah. Any other questions from the participants? Sir, my question is related to trademark, if I may ask. Okay, fine. So the question is, trademark application should be on the name of the company or it should be on the name of a person? And is there any requirement of patent attorney or an individual can also apply at their end? Okay. Deciding who would be the applicant, it is always up to the one who has found out that name or the brand name. So it is up to you to decide कि आपको कंपनी के नाम से वो ब्रांड नेम चाहिए या इंडिविजुअल आपको चाहिए, क्योंकि वो एक प्रॉपर्टी हो गई. अगर कंपनी के नाम से वो प्रॉपर्टी है तो कंपनी में जो भी डायरेक्टर्स या पार्टनर्स होंगे उन सबकी वो ओनरशिप आएगी उसमें. सेम वेज इन द पेटेंट में अगर 5 एप्लीकेंट है तो पांचों एप्लीकेंट को सेम राइट्स मिलेंगे. तो इन्वेंटर को डिसाइड करना है कि किसको एप्लीकेंट रखना है. इन्वेंटर नीड टू गिव अप्रूवल टू बी एप्लीकेंट. लेकिन ट्रेडमार्क में ऐसा नहीं है. जो भी एप्लीकेंट मतलब एप्लीकेंट ही होता है डायरेक्ट, उसमें इन्वेंटर या फाउंडर ऐसा कुछ नहीं होता है. तो एप्लीकेंट किसको रहना है, तो वो एप्लीकेंट आइदर आप इंडिविजुअल प्रोप्राइटर हो तो खुद के नाम से फाइल करो. अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी ऐसी कंपनी है तो यू शुड डिसाइड कि कंपनी को प्रॉपर्टी कंपनी को ओन करना है ये ब्रांड नेम या इंडिविजुअल को ओन करना है ब्रांड नेम. सजेस्टेबल वे कौन सा रहेगा सर? बेटर कौन सा होता है? कंपनी के नाम पे लेना बेटर लगता है, बट फिर भी एज एन एक्सपर्ट व्हाट यू रेकमेंड? इट इज ऑलवेज अप टू द पर्सन हु इज रनिंग द कंपनी, राइट? अगर आपकी कंपनी में आपके पार्टनर्स आपके रिलायबल है एंड अगर फ्यूचर में कंपनी का डिसॉल्व होना नहीं है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर द कंपनी के नाम से फाइल करो तो उसका एक पोर्टफोलियो बढ़ेगा. लेकिन अगर कंपनी खुद की है, इंडिविजुअल है, तो यू गो फॉर द इंडिविजुअल. अगर आपको कंपनी में से इनकम जनरेट करनी है खुद का, तो यू कैन गिव योर ट्रेडमार्क ब्रांड नेम यूज टू कंपनी. आप कंपनी को यूज करने के लिए दे रहे हो और उसके बाद उसमें से आप रेवेन्यू वो कर सकते हो, राइट? And individually you can file the trademark application. There is no any requirement of any attorney, right? आप खुद भी फाइल कर सकते हो, but if you are having any queries and if you are having doubts, you can always approach attorney or agent, so they will guide you more. Okay, now last question is in the trademark filing, sometimes it happens that the brand name is same of two different companies, but one company's products are in maybe class 1 and another brand, the same Yes, brand name is it's in class possible. 35. There are 45 classes in the trademark, right? Okay, so there are no issues in that, right? There are no issues. For example, you know the brand name Athi. Athi Cement is also coming and Athi Masala is also coming. Okay, but Right. I have heard that कि अगर suppose वो पहले से हाथी सीमेंट है और उन लोगों ने
कैटेगरी का कुछ ट्रेडमार्क फाइल करवाया रहता है, तो किसी भी दूसरे कैटेगरी में हम उनका ब्रांड नेम नहीं यूज कर सकते। तो ये हमें एज एन That you एप्लीकेंट need to कैसे search. पता जैसे चलेगा? इसमें प्रायर सर्च करते हैं ना, वैसे ट्रेडमार्क हाँ। में भी प्रायर सर्चिंग होता है कि तो ऑलरेडी ट्रेडमार्क में प्रायर आर्ट के लिए कोई स्पेसिफिक लिंक है? आईपी इंडिया की वेबसाइट में ये आईपी सेम लिंक, ओके। या सेम लिंक, उसमें आप ट्रेडमार्क के उसमें जाओगे ना, तो उसमें सर्चिंग का ऑप्शन है, ट्रेडमार्क सर्च भी कर सकते हो आप, राइट? यू कैन यूज दैट टूल। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। Yeah, thank you. Any other questions, or we'll be ending this session? Thank you very Hello. much, MIC. Yes. Yeah, सर हेलो yeah, go ahead. सर मैं एसआरपी ट्रेन कंट्रोल से बात कर रही हूँ। अभी हमने क्या किया है कि हमारा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, उसमें हमें वो डिजाइन के लिए सब वो गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है उसके लिए अप्लाई किया है, ठीक है। और सेम टाइम हमें पेटेंट के लिए एप्लीकेशन भी की है, तो हमें पेटेंट में मिल सकता है रिइंबर्समेंट और सब्सिडी लाइक Ma'am, I am not Design exactly के getting your question, but yeah, there are many different schemes under MSME and different ministries that you can get reimbursement for the patent once it is granted. Other many different schemes of government of Gujarat is also available, under which you can get the assistance for filing patent. Even DPIT has the scheme of SIPP, under which you can get the assistance from the facilitators who will be filing the patent on your behalf, and you just need to pay government fees. So there are many different schemes available, and yes, you can get reimbursement or the assistance, but you need to understand that under which assistant or under which scheme you are interested to go for the. Parth sir, can you Yes. also brief in 2-3 minutes regarding SPRIHA and DPIT chairs? So as there are from multiple states, the audiences, so they can Okay. get a brief glimpse that what is and how, if they can also connect across any chairs across India. So Okay. what they do. Yeah, so we'll be discussing very brief about IPR, DPIT IPR chair. So it is under Ministry of Commerce and Industries. Sorry, it is under DPIT. DPIT chair is established from Department of Commerce of Internal Trade and Trade. There are nearly 36 chairs all over across the India, and almost every state has one or two DPIT IPR chairs. You can find out the list of DPIT IPR chairs from DPIT website. Under DPIT IPR chair, the most objective of this chair is to create awareness about IPR, to handhold the MSMEs for filing of different types of IP, to run the courses of IPR. We are also running PGD IPR course at our institute. You can also find IPR courses, short-term courses or diploma courses of IPR at your nearby DPIT IPR chair. Another objective is to run mandatory the IPR subject as a syllabus for the undergraduate students at the institute where IP chair is being run. Another objective is to run moot court. Right, every year there is one moot court for the IP related subject at Delhi, and from that the team who is being finalized would be sent to WIPO, Geneva, and there they will be representing India, right? So these are the few objectives of the IPR chair, right? Most relevantly, we are not we are more into the research of the different GIs that could be filed in the near future, or that could be the GIs of our region. So the government has separately given work to the IP chairs, right? So these are the work of DPIT IPR chair, but we are not directly into assistance of IP filing to the natural person or IP filing to the startups. But yeah, you can surely connect to the IP chairs and get assistance for know-how, or you can just go for the SIPP facilitators online. So SIPP facilitators are the one who have registered themselves that they will be assisting the startups. Those who are having DP startup recognition certificate,
they can be getting the support of IP filing via SIPP facilitators, right? Yeah, also I think MSME Mitra scheme is also there. Yeah, MSME Mitra scheme is also there. So there are lots many schemes, right? So you need to go through which one you need to avail. Yeah, so thank you very much, sir, for such Thank an you. informative and engaging session. On behalf of AICTE Innovation Centers, Ahmedabad and Bhopal, Ministry of Education's Innovation Cell, Institutes Innovation Council, AICTE, Government of India, I sincerely thank you for sharing your valuable knowledge and practical insights on patent filing and prosecution. We also extend heartfelt thanks to our zonal in charge for Bhopal and Chhattisgarh states, Mr. Saurabh Nirmale and Ms. Happy Devnath, young professional and IIC zonal in charge CRO region, for their support in organizing today's session. A special thanks to all the faculty members, researchers, innovators, startup founders, innovation ambassadors, students, and the participants across the country and the states who have joined. We also noticed that some of you have done the presentation of this session in your classroom or auditorium. So we also thank all those institutions who for wider participation. And we hope today's session has added value to your understanding on IP and we'll encourage you to protect your innovations through patents. Thank you once again, everyone, for your participation. With this, we take a pause and conclude today's session. We request you to keep checking, especially IIC presidents, conveners, innovation ambassadors, and R&D coordinators. So all those who are part of IIC, we request you to keep checking your emails. We are regularly doing this kind of informative and practical sessions so that we can help you in your journey of mind to market. So with this, we conclude this session. Thank you once again. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. We are closing the session now.